जब मैं छोटा-सा बच्चा था तो मेरी मम्मी मुझे एक स्टोरी सुनाती थी जिसमें एक परी रियल लाइफ फ़ेरी जिसके पास मैजिक था, पावर था, वो कैसे अपने आस-पास सब गरीबों की मदद करती थी और अपने जादू से उनकी लाइफ एक बेटर प्लेस बनाती थी। तो जब मैं ये सुनता था, छोटा था, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होता था और मैं ये सोचता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, तो ऐसे ही किसी फ़ेरी से मिलूँगा। बट जब हम बड़े हो जाते, मैच्योरिटी अंदर आ जाती, तब ये रियलाइज़ होता है कि ऐसे कोई फ़ेरी नहीं होती, कोई जादू नहीं होता और ये सब कहानी होती है। बट रिसेंटली मैं ऑनलाइन किसी से मिला या कह सकते हैं कोई मुझे ऑनलाइन रिसेंटली मिली जिसको देख के ऐसा लगता है कि रियल लाइफ फेरी होती है, उसके पास मैजिकल पावर्स भी होते हैं। अब आप ये सोच रहे होगे ये क्या बोल रहा है, रियल लाइफ फेरी मैजिकल पावर्स। आप सोच रहे होगे ऐसे नहीं होता है। इस बात को बिना चिंगम जैसे खींचे हुए मैं आपको डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू माय मदर्स फेरी टेल रियल लाइफ फेरी से मिला देता हूँ। प्रेजेंटिंग यू और कह सकते हैं इंट्रोड्यूसिंग यू टू ऑल ऑफ यू टू माय ऑडियंस, मिली। मिली, ओवर टू यू। Okay, so hi, my name is Millie Thawani, and I'm basically a social activist. So when I say that I'm a social activist, please don't expect, me bringing a great change in the immediate society that I live in. But yes, I am doing some part, by my side to basically see a change, maybe a small change in the society, so that I really don't blame myself in the future that I just kept blaming the government, but I did not do anything. And what I believe is that when all of us come together to, do something from our side, we can definitely see our nation progressing. This is what I feel. Adding on to this, I am also a motivational speaker, and I have lately, started conducting interviews wherein I, interview people who are doing great in their lives, okay, in some or the other aspect. So, what I feel is that when I interview such people, so whoever is watching my video would, actually learn something from their lives, from their experiences and everything. So, I am doing this part, and yeah, that's it. मिली, आपकी जो सोच है वो अद्भुत है। इनफैक्ट मैं कहता हूँ ये जो काम आप कर रहे हो ये ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बट मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसा वो कौन-सा मोमेंट था, ऐसा कौन-सा दिन था जब आपको ऐसे लगा कि यस ये काम के लिए मैं बनी हूँ। अगर मैं ये काम करूँगी तो शायद मैं बेहतर करूँगी। एंड बिलीव मी आप बहुत बेहतर कर रहे हो, हम सब एग्री करते हैं आपसे। बट आप वो मोमेंट शेयर कीजिए जब आपको पता लगा कि आप ये काम करना चाहती हो और इससे आपको खुशी मिलेगी। Basically, I had got an internship during the first year of my college to, go and basically work in an NGO. So thankfully, I got an NGO that welcomed me like a family. Okay, and when I went there, I literally did not know that this was the reality because my knowledge about the poor was only restricted to the textbooks in the school or maybe in the college. But when I actually went there and, when I started seeing the reality by visiting slums and, by actively participating in different drives such as menstrual drives, waste drives, etc., I got to know the reality, and that reality basically brought goosebumps. So this was when, a lot of my classmates, a lot of the students, who were doing the same internship, just did it for the sake of it. But I actually wanted to continue it, and this is when, I started visiting that place often whenever I came to my hometown because I study in Bangalore. So whenever I came to my hometown, I used to visit, and the way, those children always welcome me is just so amazing. So this is when I, actively participated in mostly all the drives and everything, so that something can be done by my side to bring a change in the society. And then the lockdown was too transformation for me because, there were many instances when I talked to people and when I learned, something, or when I grabbed something out of their experiences. So this was when I thought that why just to myself? I should also, gather information from them by requesting them to come and talk to me, and so that, they can basically spread their information, spread their knowledge about their lives basically to the people, to the mass.
And I do not run for any likes, follows, or anything. I just want that even if 5 people watch my video, they should grab out something informational out of my videos. So, yeah. दैट इज़ सो ग्रेट। मैं आप सबसे गाइज़ एक बात कहना चाहता हूँ, एक इंसान अगर किसी दूसरे इंसान को खुश करे, उसके चेहरे पे एक स्माइल लेके आए, तो ये इस जहान का सबसे बड़ा पुण्य का काम है, सवाब का काम है। बट मिली आप थोड़ा इसे और एक्सप्लेन कीजिए, यानी हम सबको बताइए, ये काम करने से अगर ये काम आप वहाँ कर रहे हो, अगर हम यही सब यहाँ काम करें, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ता है सोसाइटी में, कुछ चेंजेस आते हैं। आपने क्या देखा? अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए। थोड़ा इसे विस्तार में समझाने की कोशिश कीजिए प्लीज़। So I basically won't say that, whatever I'm doing is bringing a great change in the society, but yes, it is definitely getting a change in the society because the responses that I get, maybe because of the videos that I post or maybe because of the thought process that I carry, does, bring a change in the, followers basically, whoever is following me, maybe a number of followers. So whoever is doing that, a lot of people respond to my videos by saying that, we definitely grabbed something out of your videos, we definitely grabbed something out of your concepts that you have been thinking about lately and everything. So what I feel is that as an individual, I definitely cannot bring a great change in the society, a change that can actually change the lives of a lot of people. But what I feel is that I want to change my life. I do not want to make it ordinary with the way people are living it, okay? I do not want to basically follow that schedule of, watching TV, using phones, and, not being aware of about what is going on in the world or anything. What I feel is that I keep myself updated about whatever is going on in the world so that I can learn by people's lives. Then I interview people and then I go and, help my NGO and everything. So, with all of these, what I feel is that when I am growing as an individual, I definitely carry that capacity, that power to, change an individual's mindset too. This is what I feel. So, yeah. अगेन सो ट्रू। मिली आप जो कह रहे हो उस बात में कितना सेंस बनता है, कितना कुछ सीखने मिलता है। और हाल फिलहाल में जो इंसानियत जिस स्टेज पे है, ऐसे लग रहा था हम ऑफ ट्रैक हो गए। बट रियल लाइफ हीरो लाइक यू, और आपके केस में कह सकते हैं रियल फेरी, आपको देख के ऐसा लगता है कि देर आर स्टिल मैनी मैनी होप लेफ्ट। और मैं आपसे बस एक और सवाल करना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताइए, हम जैसे लोग जो आपसे बहुत दूर है या अपने घर से हेल्प करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या सजेशन दोगे? यानी वो लोग कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं? कैसे आपके पास या इन लोगों के पास रीच कर सकते हैं? प्लीज़ कुछ आप इसमें भी सजेशन दीजिए अपना। Yes, definitely, because a lot of people hesitate to, go and work in the ground reality. To, actually, they have a lot of consideration to, work for the society and everything, but at times, sometimes because of several factors, they, restrict themselves in coming into different slums or anything. So, at this point of time, if they want to help, by whom, what they can do is that, you know, they can always DM me for the same if they really want to help, and then I can pass on their messages or any sort of if they want to donate anything to the NGO that I'm working with. So with this, what would happen is that even if they cannot come in, or even if they cannot visit the place that I'm living in, so they can definitely DM me for the same of whatever they're wanting to do, and I will pass on their positivity to the people out there. And along with this, a lot of viewers, whoever is watching this video, may not be present in my hometown. So I am not saying that it is necessary for you to, come in and only DM me. Even if you want to, work, or even if you want to help from your home, what you can do is contact any NGO around you, any NGO, or not even an NGO, if then you can have those clothes, those spare clothes that you're not wearing these days, or food. Basically, you can go in and you can go and just give it to your house help or anybody. Okay, with this you feel good about yourself, you feel that yes, you've done something for your immediate people who are actually working day and night, get a smile on your face. So why not be the reason of the smiles, right?
So you can do this, and if you do not want to visit them individually, face to face, then you can definitely contact any NGO, because then they act as mediums to go in and work for you. Okay, basically by bringing smiles on their faces, and the reason would be you. So yeah, my perception would be this. That's all. टोटली एग्री विथ यू मिली, 100% एग्री विथ यू मिली। मिली, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप वो मेरी मम्मी की जो फेरी वाली स्टोरी है वो आप उसको 100% रियल लाइफ में ट्रू कर रहे हो। वो लाइफ में जैसे आपको देख के लग रहा है जान आ गई। आई एम सो ग्लैड। आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ, आप जो काम कर रही हो उसके लिए मैं आपको जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। वर्ड्स छोटे पड़ रहे हैं यहाँ, बट फिर भी दिल से मेरी तरफ से एंड आई एम श्योर सब की तरफ से आपको थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और रियली आप बहुत लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, नाउ इंक्लूडिंग मी। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय वीडियो मिली, एंड आई विश ऑल द सक्सेस टू यू। और आप जो चाहते हो वो जैसे चाहते हो वैसे हो जाए। थैंक यू अगेन सो मच, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट मिली। Thank you. I hope you take out something fruitful about whatever conversation we had right now, and it was great being with you. Thank you so much for having me in your show, in your talk show. It was great. Thank you. बस तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको मिली अच्छी लगी होगी, मिली का काम अच्छा लगा होगा। प्लीज़ गाइज, जैसे वो कहती है पैसे से ही सपोर्ट नहीं होती, आप किसी की मदद भी कर दो तो हेल्प हो जाती है। तो ये वीडियो में इतना ही, मैं आपको और कोई वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अब तक यहाँ देख लिया तो प्लीज़ वो लाइक बटन दबा देना और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, एक कमेंट छोड़ देना। दिस इज़ योर फ्रेंड शोभू साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे। बाय। सब्सक्राइब।